3 times Om chanting. Om. Now start Kaichaman. Om Bhur Bhuvashvaha Tatsivitarvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yunah Prachodaya. Very gently and softly rub your both palm, everyone. Touching your eyes, touching your face, touching your neck, touch upper body and lower body and relax. Okay, everyone, now rotate your neck 10 count clockwise direction. Straight your spine, roll your shoulder back very gently, clockwise direction 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, inhale, 10, exhale, and relax. Okay, everyone, relax center. Again, open your both hands and turn your upper body. Right side, drop your left hand, right knee, and look back side. 1, spine is straight. 2, exhale, turn your upper body left side. Side change. And 3, inhale. 4, exhale. 5, inhale. 6, exhale. 7, inhale. 8, exhale. 9, inhale. 10, exhale, and relax. Again, center. Okay, everyone, relax. Again, next, get ready, butterfly pose. Bend your right and left knee, interlock your feet, straight your spine, chest open, look forward, then shake your both knee. Leg. 1, 2, spine is straight properly. 3, 4, 5. Come on, everyone. Try to do fast. Stretch your spine properly. 6, 7, 8. Knee properly straight. 9, 10. Anti-clockwise. Sorry, 10 more. Same direction. 10 more. 11, 12, 13, 14, 15. Come on. Try to do fast. 16, 17, 18,
19, 20. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. Good, good. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, relax everyone. Center. Close your both leg and shake your leg and thighs. Relax and shake your both leg thighs. Deep breathing and breathe out. Okay, again come to Vajrasana like this. Bend your both knee and open your both knee little bit. Then lift your both hands up. Breathing, straight your spine, chest open. Inhale and exhale. Come forward, drop your both palm. Your mat, chest and chin down. Okay, exhale. Come to child pose. Then child pose to cobra pose. Inhale, cobra pose. 1, 2. Exhale, child pose. 3. Inhale, elbows straight, look ceiling side. 4. Then back. 5. Inhale, like try to do fast. ठीक है, थोड़ा सा fast कीजिए सभी ने 50 count तक. ठीक है everyone. Now exhale, 1, 2, एक्सक्यूज मी मैम 3. Yes, yes. मैम पीरियड्स में कर सकते हैं Sorry. पीरियड्स में कर सकते हैं ये वाला पीरियड्स में अगर फर्स्ट या सेकंड डे है फिर नहीं करना है. ठीक है, अगर थर्ड डे है तो आप कर सकते हो. मैम फिर आप हमें कोई और बता दीजिएगा ओके, आप बटरफ्लाई कर लो या फिर आप हैप्पी बेबी पोज कर सकते हो. फुट भी ले सकते हो. ठीक है, लाइक दिस. इनहेल, लिफ्ट योर बोथ लेग अप 60 डिग्री. ठीक है, लेग प्रॉपर्ली अप, नी बिल्कुल स्ट्रेट एंड एल्बो स्ट्रेट. दिस इज बोट पोज. ठीक है, बोट पोज में प्रॉपर्ली आप ऐसे बैलेंस बना पा रहे हैं क्योंकि इससे आपके लोअर वैली पे स्ट्रेच आएगा. ठीक है, तो देन आपने होल्ड करना जितना भी पॉसिबल है. एंड सेकंड, जिनसे नहीं हो रहा है नी बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपने दोनों हैंड से होल्ड करना है लेग को एंड फिर नी को हल्का सा बेंड कर सकते हो लाइक दिस. ओके, ऐसे आप कर सकते हो. जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है बिल्कुल भी नहीं, तो अपने बैक को वॉल पे ड्रॉप करके लेग को लिफ्ट कर सकते हो. ओके, चलिए कंटिन्यू. लिफ्ट योर लेग अप. लेग को लिफ्ट करो, एल्बो स्ट्रेट. होल्ड. 1, 2. लेग को होल्ड भी कर सकते हो. ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा है लेग लिफ्ट, आप ऐसे होल्ड कर सकते हो. 3, 4, 5. वेरी गुड. 6. वेरी गुड संगीता जी, अर्पिता जी गुड, रिया जी गुड. 7, 8. हाँ, गुड हिना जी. 9. गुड इशिका जी. खुशाली जी गुड गुड गुड. प्रियंका जी. 10. 10 more, 10 more. 11, 12. गुड प्रीति जी. अंतरा जी वेरी गुड. हाँ, गुड मंजू जी. दर्शना जी गुड गुड. 13, 14, 15. गुड गुड आशु जी. 16, 17. गुड गुड रूपम जी. कृति जी वेरी गुड. 18. Very nice everyone. Come on, come on, come on. 19 and 20. Okay, drop your feet down. Shake your leg and thighs. Leg is straight. Shake your both leg and thighs. Relax. Shake your leg.
Okay, everyone. Again, one more time. Same word pose. ठीक है, फिर से आपने रिपीट करना है. Lift your leg up, elbow straight and hold. 10 count. 10 count तक hold कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, everyone, relax. Again, shake your leg and thighs. Deep breathing and breathe out. Okay, next everyone, bring your both knee and drop your elbow down. This like and inhale, bring your both knee this position and palm down. Inhale 1, bend your knee and 2. Exhale, straight your both leg 20 degree. Then again close, then leg straight. Again close 1, 2 and जिनको लोअर बैक या साइटिका का पेन है आप पिलो या फिर कुशन भी अपने हिप के नीचे ड्रॉप करके कर सकते हो. ठीक है, चलो कंटिन्यू. 1, inhale, 2, leg straight 20 degree, then again 3, close, 4, leg straight 20 degree, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exercise. Side fit. Hello. Hello. हाँ, I'm saying आपने side fat के लिए कोई exercise. ओके ओके साइड फेड के लिए लाइक आप त्रिकोणासना वो काफी हेल्प करता है. देन आप जंपिंग जैक्स के हो गए या फिर साइड स्ट्रेचिंग के लाइक जो स्टैंडिंग में मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ ना, इन वो काफी हेल्प करते हैं इसमें. ठीक है, बस आप उसके रेपिटेशन ज्यादा कर सकते हो, है ना. Okay. एंड माउंटेन टू कोबरा. और बैक में ना बैक साइड पे यहाँ पे फैट है बहुत. जो ब्रा की स्ट्रैप आती है ना उसमें से अलग से दिखती है चर्बी. तो उसके लिए भी कुछ. हाँ, इसमें माउंटेन टू कोबरा पोज करो, ये भी काफी हेल्प करता है. या फिर माउंटेन टू लेजर पोज, है ना. या ऐसे साइड स्ट्रेचिंग लाइक त्रिकोणासना मैं करवाती हूँ, तो वो काफी हेल्प. हेलो मैम. मैम पूरे हेलो. दिन लैपटॉप का काम रहता है तो उसके लिए बीच बीच में क्या कर सकते हैं जो बैक पेन ना रहे. ओके, बैक पेन का देखो लाइक मैं से उसमें आप ना चाइल्ड पोज टू कोबरा पोज करो, टेबल टॉप पोजीशन लाइक कैट काउ पोज, वो काफी हेल्प करता है. ठीक है, क्या होता है ना, आप सिटिंग पोजीशन में ज्यादा देर तक रहते हो तो मतलब बैक पे भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे भी हम्प हो जाता है मतलब ना. तो लाइक चाइल्ड पोज टू कोबरा पोज ये भी आपको काफी हेल्प करता है. एंड सेकेंड आपको कैट एंड काउ पोज. ठीक है, वो भी आपके लिए काफी हेल्प है. लाइक मैं क्लास में जब भी करवाती हूँ ना, देन उसको मैं आपको बताती भी हूँ कि लाइक ये किस चीज के लिए आपको काफी हेल्प करेगा. ठीक है, तो देन ओके मैम, थैंक यू. मैम एक चीज पूछनी थी. ओके. हेलो. जी जी पूछिए. हाँ जी जी. हेलो. यस. मैम एक्चुअली मेरा लाइक 1 to 1.5 मंथ के बाद मैंने योगा स्टार्ट किया है तो बॉडी में बहुत पेन आ रहा है. अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ था तो सो लाइक लेग्स आर पेनिंग रियली बैडली. सो उसके लिए क्या करना चाहिए. ओके, अभी तो लाइक अभी कितना टाइम हुआ है आपको क्लासेस ज्वाइन करके? मैम 2 दिन हुए हैं.
ओके, तो आपको ना थोड़ा सा आपको टाइम दो खुद को, लाइक 10 या फिर 15 डेज कंटिन्यू, लाइक जो भी मैं क्लासेस में आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना, देन आपको इतने में हाँ ही आपको लग जाएगा कि हाँ बॉडी ओपनिंग हो रही है, क्योंकि बॉडी इतने टाइम बाद आपने किया है तो वो पूरा बॉडी स्टिफ